जय भीम नमो बुद्धा भारती भाई। दीदी सो गई। अंजू सिस्टर जय भीम नमो बुद्धा। सोई नहीं हूँ बहन। कैसी हो आप बताओ। जय भीम जय भीम जय भीम रमेश भैया। जय भीम नमो बुद्धा। कैसे हो सिस्टर। तबीयत ठीक नहीं है भैया। खाना पीना हो गया। अभी नहीं भैया, खाना पीना कुछ नहीं हुआ है। आप कैसी हो दीदी। क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान नीला सलाम दीदी। जय भीम नमो बुद्धा भाई। मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। आपका स्वास्थ्य कैसा भाई। क्या हुआ बेटा। परेशान नहीं करते हैं बाबू। सो जाओ चुपके। क्या हुआ आपको दीदी। आपका खाना पीना हो गया। खाना अभी नहीं हुआ भाई। क्या हुआ है दीदी आपको। बाय बाय रमेश भैया बाय बाय। मेरी बीपी बहुत लो है। मुझसे बोलने का मन नहीं हो रहा, खड़ा होने का मन नहीं हो रहा। बुखार भी बहुत तेज हो गया था। मैं भी बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा पूरा तरह से दीदी। जल्दी ठीक हो जाओ भाई, बस यही प्रार्थना है। आप लोग सही रहो। क्या लाइट बंद कर दो। बंद पंखा नहीं, मुझे ठंड बहुत तेज लग रहा है। दीदी जाओ खाना खा लो। खा रही सिस्टर, अभी तो काम करके जस्ट थोड़ी सी फ्री हुई हूँ। खाने का मन नहीं हो रहा। आप आराम कीजिए दीदी। मैं आराम ही कर रही हूँ भाई। सुबह से सोई हूँ मैं 10 बजे, 9:30 बजे से सोई हूँ। शाम को उठी मैं 5:30 बजे। हम सही तभी रहूँगा जब ठीक रहेंगे, जब आप ठीक रहेंगे। मैं ठीक हूँ भाई, मुझे कोई वैसी दिक्कत नहीं है। मैं खुद को टेंशन नहीं लेता हूँ दीदी। मैं खुद ही, मैं जब उठी हूँ ना तो हस्बैंड को ड्यूटी जाना था तो खाना ना बनाए। मैं खुद ही आपको नहीं पूछ पाई, मैसेज भी नहीं कर पाई कि भाई कैसे हो। सुबह जल्दी जल्दी में आकाश का पेपर था, उसको तैयार करके उसको छोड़ना, फिर आई घर में काम था, खाना नहीं बनाई, सो गई। लेकिन आपको कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। टेंशन नहीं लेना है भारती भाई, टेंशन नहीं लेना है। मेरी बीपी बहुत लो है, बस इसी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं क्यों हो गई इतनी लो। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता भाई। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर राइट बोल रही हो। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता तब भी ही मैं लाइव में जुड़ा रहता हूँ, सिर्फ आपके लिए दीदी। मुझे पता भारती भाई, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। इसीलिए तो मैं भी लाइव नहीं चला रही हूँ ना। शाम को भी नहीं चलाई, सवेरे भी नहीं चलाई। मन भी नहीं लग रहा था, सबसे बात नहीं हुई। हाँ बेटा सो जाओ। टेंशन नहीं लेना चाहिए दीदी। टेंशन नहीं लेते हैं सिस्टर। आराम से सो जाओ। टेंशन नहीं लेते हैं बहन, कमजोरी की वजह से ऐसा होता है।
आप नींबू और काला नमक के साथ पकाकर चूसना दीदी। हाँ, मुझे जुकाम की वजह से भी ऐसा हो रहा है ना भाई, जुकाम ना मेरा एकदम सीने जैसे जकड़ रहा है, गले से एकदम जैसे आवाज खांसी हो रही है ना, जैसे आवाज लग रहा है कितना जैसे सीने पे जमा हुआ है बलगम, ऐसी दिक्कत हो रही है। सही कह रहे हो भाई आप। बेटा परेशान नहीं करना। सॉरी दीदी, जो मैं आपकी हाल चाल भी नहीं ले पाया। पागल भाई, तबीयत आपकी खराब, हाल चाल आप नहीं ले पाए, उल्टे मैं नहीं ले पाई। सॉरी तो मुझको बोलना चाहिए। बताओ, सॉरी तो मुझको बोलना चाहिए भाई, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ दीदी और बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मुझे पता है भाई। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? इलाज करवाने के चक्कर में? अच्छा, इलाज करवाने के चक्कर में। इलाज सही से कराओ भाई। मैं तो दूसरे को बोलती हूँ, मैं खुद लापरवाही करती हूँ। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम मंगरू भाई। आप कैसे हैं मंगरू भाई? आपका खाना पीना हो गया है? पापी मामा का नाम है। मैं लास्ट में सोऊंगा। सीधे दे बेटा। मेरी तकिया देना श्रेया, छोटी। मैं ठीक हूँ मगरमच्छ भाई, आप कैसे हो और तबीयत कैसी है? अच्छा। हाँ, तुमको गर्मी लग रही है ना बेटा, मुझे ठंड लग रहा है। अभी तक मेरा 3,000 रुपये खर्च हो गया दीदी, अब क्या अच्छा से करवाऊँ? कोई बात नहीं है भाई, आ जाएगा फिर। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब आ जाएगा, पैसे की टेंशन नहीं लेना। सही हो जाओ। हम तो पैसे भी इतना इतना लगा दे रहे हैं, सही भी नहीं हो रहे हैं, बताओ। मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सो रही हूँ तब। मैं भी अभी परेशान हूँ मंगरू भाई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ठीक हो जाऊँगा दीदी। रिपोर्ट में क्या निकला भाई? दोबारा भरते भाई बताओ। दोबारा क्या निकला? वही तो, सही हो को होता है दीदी, पैसा का कौन परवाह कर। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ब्लड चेकअप में क्या निकला? वही हम भी पूछ रहे हैं भैया। मेरा टाइफाइड हो गया है दीदी, टाइफाइड हो गया भाई। उसका भी 15-20 दिन कोर्स होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है टाइफाइड में। टाइफाइड में हाथ पैर पूरा एकदम शरीर जोड़े जोड़ बहुत दर्द होता है। टाइम से दवाई खाओ भाई। इंसान की जिंदगी जा कर के चारों तरफ से बस दवाई पे टिकी हुई है। पपीता का पत्ता ताजा वाला, उसका जूस पियो। हाँ, यही पीते हैं लोग, या तो चिरैता।
चिरायता तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सब नहीं पी पाते हैं। मैं खुद नहीं पी पाती हूँ। अभी शुरुआती था, इसलिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि 5 से 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चिरायता क्या होता है? चिरायता क्या होता है? बेटा एक जड़ी बूटी होती है, ये बहुत कड़वी होती है, बहुत ज्यादा। कल मुझे पिला दे दे कब। तू पी जाएगा बेटा, मुझे पता है, बट मैं नहीं पी पाती ना। ज्यादा नहीं, एक चम्मच। वही कर रहा हूँ दीदी, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई। पियो थोड़ा थोड़ा सही, हम तो नहीं पी पाते हैं। संध्या राव ऑफिशियल, हेलो दीदी, जय भीम जय भीम। संध्या सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसी हो? मुझे हुआ था, मैं तो एडमिट था 1 हफ्ता। सोनू भैया, मुझे हमेशा हो जाता है, मेरा बुखार कभी जाता ही नहीं है। मैं अभी कराऊँ, अभी मेरा निकल जाएगा। जब मैं बीमार पड़ती हूँ, मेरा ब्लड टेस्ट होता है, तब मुझे टाइफाइड निकल जाएगा या तो मलेरिया। जब भी बीमार पड़ती हूँ, अभी जाके चेकअप कराऊँ, तो अभी दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। ऐसा होता है। मैं आज चिरेता पी लेता आया हूँ दीदी। अच्छा लेकर आया हूँ। मिस्टर मंजय, हेलो हेलो भैया, कैसे हो आप? संध्या सिस्टर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पियो भाई, उससे लोग बोलते हैं ना, सही हो जाते हैं। लाइक डन, थैंक्स भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, सो जाओ। भारती भाई, रेस्ट करो आप, रेस्ट करो भाई आप। स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, रेस्ट बहुत जरूरी है। मैं तो आज सुबह से सोई थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है आज। कैसी हो? तबीयत ठीक नहीं है मंजे भैया। मेरा 1 महीना दवा चला था, वही तो कह रही हूँ, 15 से 20 दिन का कोर्स होता है। अगर सही नहीं होता तो और बढ़ा देते हैं। मुझे कड़वा से कोई फर्क नहीं पड़ता है दीदी, बहुत अच्छी बात है भारती भाई। मैं तो नहीं पी पाती भाई, सच बता रही हूँ। मैं बहुत आसानी से पी लेता हूँ चिरायता को। बहुत अच्छी बात है भारती भाई, सब नहीं पी पाते हैं, कड़वा बहुत लगता है। पपीता का पत्ता, बकरी का दूध बहुत अच्छा काम करेगा भाई। हाँ, बकरी का दूध भी। भारती भाई, आप बकरी का दूध पियो। सोनू भैया बोल रहे हैं पपीता का पत्ता भी लगातार 3 दिनों तक पिया हूँ। दवा नहीं लिया? दवा लिया है भैया, दवा तो ये खा खा के और परेशान है।
बकरी कहाँ से ढूंढूं? यदि मिलेगा तब ना। गांव में नहीं है किसी के भाई? गांव में तो होगी, घर पे नहीं है तो किसी के गांव में तो होगी। हाँ बेटा। ये देना। क्या? नहीं, इसी से कमेंट पढ़ दो। अरे 1 मिनट। नहीं, मेरे घर है भाई। अच्छा, बकरी खरीद लो एक भारती भाई। बबलू भैया जय भी, नमो बुद्धाय, स्वागत है। कैसे हो आप? कैसे हो बड़े भैया जी? मैं सब चीज से थक गया हूँ, फिर मैं आज मार्केट से दवा के साथ साथ चिरायता लेकर आया हूँ। चिरायता बहुत अच्छा होता भैया, क्योंकि बहुत लोग, हमारे घर में भी लोग पी लेते हैं। जय भीम जय संविधान। जय भीम जय संविधान बबलू भैया जी। मुझे भी कड़वा लगता है दीदी। यही तो बात है सिस्टर, हम लोग नहीं कर पाते ना इलाज सही से। मुझे तो कड़वा ही चीज पसंद है। अच्छा, और कल से लगातार चिरेता को पीना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, दवाई के साथ साथ वो नुकसान नहीं करेगा, फायदा है। हम अच्छे हैं बहन जी, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं भैया, रह रह के तबीयत खराब हो जाती है, क्या करें, इसी से परेशान है। आप कैसे हैं बबलू भैया जी? क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान, नीला सलाम बबलू भैया, भारती भाई बोल रहे हैं। आप कैसे हैं बबलू भैया पूछ रहे हैं। भारती भाई अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो। आपका खाना पीना हो गया है बबलू भैया? भारती भाई पूछ रहे हैं। जय भीम भाई, जय संविधान, सादर नमो नमो बुद्धाय। थैंक यू भैया, बबलू भैया थैंक यू सो मच। लगातार नहीं पीना चाहिए, गैपिंग करना होता है। लगातार भी ज़्यादा और नुकसान करेगा। जी भारती भाई, हमारा खाना पीना हो गया है, बबलू भैया बता रहे हैं। मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ बबलू भैया जी, बल्कि मैं डॉक्टर के कहने पर कर रहा हूँ। क्या हुआ है आपको? बताओ भारती भाई, भैया पूछ रहे हैं। बताइए तो जरा आप हमको। थैंक यू सिस्टर। बताओ भारती भाई, भैया पूछ रहे हैं। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। कोई महावीर वाला करवा दिया है 151 रुपया देकर। बहन मेरा सब्सक्राइबर पूरा हो गया, लेकिन वॉच टाइम कैसे पूरा? वॉच टाइम का ही मेन बात होती है भैया, वॉच टाइम तो ही जल्दी नहीं पूरा होता है ना। या तो लॉन्ग वीडियो डालो या तो लाइव चलाओ, दो ही ऑप्शन है।
क्या पगली, जाने दो भारती भाई, नींद आ रही है। आप भी रेस्ट कर लो भारती भाई, आप भी रेस्ट कर लो। लाइट चलाया करो मंजे भैया। या तो लॉन्ग वीडियो अपलोड करो, शॉर्ट से वॉच टाइम नहीं आते हैं। भारती भाई हम सीरियस पूछ रहे हैं, अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा भी फोन चार्ज 3% है। मुझे टाइफाइड हो गया बबलू भैया जी। कोई जुड़ता नहीं लाइव। जुड़ेगा भैया, क्यों नहीं जुड़ेगा। जिसका सपोर्ट करते हैं वो तो जरूर जुड़ेगा। अभी फर्स्ट स्टेज में है टाइफाइड। भारती भाई अगर टाइफाइड को हल्के में लिया ना आपने या आपके डॉक्टर ने, तो ये आपकी आने वाली जिंदगी खराब कर देगा। बात सही कह रहे हो बबलू भैया, जब बुखार ऐसे अंदर अंदर सही नहीं होता ना, खराब जाता, तो आगे दिक्कत होती है चल के। ध्यान रखिएगा और सीरियसली लीजिएगा हमारी बात को। बबलू भैया बोल रहे हैं भाई मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओके सिस्टर, सो जाओ। हाँ बबलू भैया ये तो सही बात है। खेत में काम कर रही थी भाई, आपकी भी फल आया करो रोज एक। कीवी फल, हाँ कीवी फल होता है। ओके पूजा बहन, जा सकती हैं। अपना ख्याल रखना पूजा बहन, बाय बाय। मैं क्या ही कर सकता हूँ बबलू भैया, क्या नहीं कर सकता हूँ। कोर्स भर दवा कराओ भाई अच्छे से। टाइफाइड का बुखार से कोई लेना देना नहीं है बहन जी, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जो टाइफाइड बोला बैक्टीरिया से होता है। सच में बबलू भैया मेरे साथ भी, मुझको भी ऐसे ही होता है। मेरा जब भी स्वास्थ्य खराब होता है ना, मेरा ब्लड टेस्ट होता है, मुझे टाइफाइड तुरंत, हमेशा। अभी मैं चेक कराऊं ना ब्लड टेस्ट, तो फिर निकलेगा मुझे टाइफाइड। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मैं नहीं समझ पाती। या तो टाइफाइड या मलेरिया, दो में से एक जरूर निकलेगा। जब जब मैं बीमार पड़ती हूँ, मुझे जब ब्लड टेस्ट कराऊंगी, दो में से एक जरूर निकलता है। बुखार मेरा कभी जाता ही नहीं है। जब थोड़ी सी सुस्ती आती तब एकदम बुखार से हो जाता है। मैं डॉक्टर के कहने पर ये कर रहा हूँ बबलू भैया। टाइफाइड एक इंटेस्टाइनल डिजीज है। अच्छा भैया। परेशान मत करो, जाओ सो जाओ। सुबह उठ के जाना ना, पेपर है ना, सो जाओ। मुझे तो सब हो गया है। इसका समाधान क्या है बबलू भैया, भारती भाई बोल रहे हैं। ठीक है भाई, आप लोग भी अपना ख्याल रखना। ओके सिस्टर, गुड नाइट, बाय बाय।
ओके पूजा बहन। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ये हमारा नंबर है, कल सुबह 10 बजे के बाद कभी भी हमें फ़ोन कीजिएगा। भारती भाई बोल रहे हैं, ठीक है बबलू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं लाइव चालू करके सो जा रही हूँ दीदी। सो जाओ सिस्टर, कोई बात नहीं, नहीं चालू करोगी तो भी कोई बात नहीं बहन, सो जाओ आप। आपको सुबह जाना है ना ड्यूटी, काम पे, सॉरी। तब आपको सब बताएंगे और समझाएंगे। बबलू भैया बोल रहे हैं, भारती भाई मैं आपसे संपर्क करूंगा कल। आप डॉक्टर हैं बबलू भैया जी? जी हम डॉक्टर बबलू भैया ही हैं, डॉक्टर विकास सिंह जाटो। थैंक्स भैया, थैंक्स, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भैया जी। ऐसे एक दूसरों का हेल्प करना ही चाहिए। ये बात मुझे पहले पता होना चाहिए था। मुझे कल पता चला भारती भाई, भैया आए थे ना लाइव में कल या परसों, तो भैया बोल रहे थे पेशेंट आए हैं, थोड़ा देखने जा रहा हूँ सिस्टर, बिजी हूँ। तब मुझे पता चला कि भैया डॉक्टर हैं। तब मुझे और बेहतर होता मेरे लिए। बिल्कुल भारती भाई, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भैया जी। बहन जी बहुत मरीज ठीक हुए हैं हमारे हाथ से, यूट्यूब के माध्यम से। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बबलू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। करना चाहिए भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप क्लिनिक चलाते हैं बबलू भैया, भारती भाई पूछ रहे हैं। अभी भी बहुत मरीज चल रहे हैं हमारे, जिनका ट्रीटमेंट हमारे कंसल्टेंसी और
गाइडेंस में चल रहा है। अच्छा भैया जी। जी भारती भाई, हमारा अपना क्लिनिक है। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भैया जी। कहाँ पे? गाजियाबाद में भैया? कहाँ पे है बताना, कहाँ पे है बबलू भैया? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बबलू भैया जी। भारती भाई बोल रहे हैं। बबलू भैया कहाँ पे है आपका क्लिनिक बताना। भारती भाई, संगीता बहन जी को भी परसों हमने ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी उनकी लाइव में ही। वो 5 दिन से वेट कर रही थी हमारा, हम जा नहीं पा रहे थे उनके लाइव में। अच्छा भैया, संगीता दीदी को तो हम जानते हैं। हाँ, उनका भी तबीयत कुछ दिन से खराब था। मेरा फ़ोन चार्ज 1% है दीदी। ओके भारती भाई, आप रेस्ट भी करो और जा भी सकते हो आराम से। बहन जी, हमारा क्लिनिक गाजियाबाद में ही है। अच्छा भैया, अपना ख्याल रखना दीदी। ओके भारती भाई, आप भी अपना ख्याल रखना। आपका भी स्वास्थ्य खराब हो गया भारती भाई। हमसे ज़्यादा आप अपना ख्याल रखो भारती भाई। अपना ख्याल रखिएगा बबलू भैया जी, भारती भाई बोल रहे हैं। सभी को धमरात्रि दीदी, धमरात्रि भाई, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय भाई, बाय बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो। बाय बाय भाई। हरदोई, लखनऊ, आजमगढ़, बस्ती, जौनपुर, बदायूं, मुरादाबाद, मुंबई, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में भी अभी भी पेशेंट चल रहे हैं हमारे। अच्छा भैया, थैंक यू बबलू भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुनकर बहुत खुशी हो रही है। धमरात्रि भारती भाई, बबलू भैया बोल रहे हैं। पंखा चालू कर लो, घर में रहो, नुकसान करेगा ये। कुछ नहीं, नहीं होता। सबसे ज्यादा हरदोई में चल रहे हैं बहन जी। अच्छा भैया, मैं भी तो इलाज करा करा के थक गई भैया। खाने का मन नहीं करता, दवा कंटिन्यू मैं खा रही हूँ। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, दवाई वो फेंक दूँ, बट क्या करूँ। और सबके सब हमारे बहुजन समाज से हैं। बहुत गर्व की बात हो भैया।
कि आप जैसे लोग अपने समाज को आगे ले जा रहे हो हर तरह से। बहुत खुशी होती है ऐसा सुनकर। बेटा पंखा कम करो, छोटी जल्दी जाओ काम करो, मुझे बहुत ठंड लग रहा है, बुखार है ना इसलिए। कम करो, जैसे था वैसे करो। बहन जी, अगर हो पाए तो एक बार आप हमें अपनी सभी टेस्ट और एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल करेंगे बबलू भैया, ऐसी बात नहीं है, हम करेंगे। हमारे पास सारे पूरे टोटल रिपोर्ट है, सब है। जरूर करेंगे बबलू भैया। अभी क्या सेंस आ रहे हैं बहन जी अब। मुझे बस दिक्कत वही है भैया पहले वाली, लेकिन उतनी नहीं है ना। और पहले से कुछ ठीक है, अभी तो मुझे जैसे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, जुकाम अंदर से ऐसा इस वजह से हो रहा है। मुझे सांस लेने में मेरी बीपी बहुत लो जा रही है। मेरी बीपी हमेशा लो हो जाती है। जुकाम हो जाते हैं ना तो मुझे सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। हाँ, पानी कम पीती हूँ, ये बात राइट है भैया। मेरे से पानी नहीं पिया जाता, पानी बहुत कम पीती हूँ। 2 लीटर तो मुश्किल से, उससे कम ही पीती हूँ। पानी नहीं मेरे से पिया जाता भैया, ये तो बात राइट है। पानी बहुत कम पीती हूँ बबलू भैया। मुझे भूख ही नहीं लगती है, खाना भी बहुत कम खाती, 1 रोटी मुश्किल से खाती हूँ। खाना भूख भी नहीं लगती, ना प्यास ही लगती है।
आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई बहन जी, जिसकी वजह से आपको सीजनल डिजीज जल्दी पकड़ लेती। बिल्कुल भैया बिल्कुल, ये तो बात डॉक्टर भी बोलते हैं, ये बात तो डॉक्टर भी बोलते हैं। मुझे थोड़ा सा भी लगता है कि शरीर में जैसे ऐसी एनर्जी कम, तुरंत बीमार, जरा सा मौसम चेंज होगा तो भी बीमार। बिल्कुल राइट, आपकी बात सही है भैया। आपको लीवर इन्फ्लेमेशन हमेशा रहता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा थकान रहती है और भूख नहीं लगती, और आपके एपेटाइजर एंजाइम खत्म होते जा रहे हैं। पता नहीं भैया जी, सच में मुझे भूख बहुत कम लगती है, भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, थकान सुस्ती सुस्ती सी महसूस होती है। मेरी सुबह से तबीयत इतनी ख़राब है ना, मुझे ऐसा लग रहा है शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। मैं तो दवाई ववाई खाई इतनी टाइम, थोड़ा सा मुझे आराम मिला है। सुबह तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा मुझे, जैसे लग रहा था शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा, किसी की अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है। जब मेरी बीपी लो होती है ना, तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन। वही तो कह रहे हैं बहन, हाँ। अब आज्ञा दीजिए बहन जी, हम फिर आएंगे धमरात्रि बहन जी। धमरात्रि भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भैया जी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
ध्यान रखें अपना आप। शादर नमो बुद्धाय। जय भीम बहन जी, जय भीम। नमो बुद्धाय भैया जी, आपको भी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। धमरात्रि भैया, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय भैया, बाय बाय। बोलो मंजू भैया। खाना पीना हुआ आपका?